नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this in mind, let's kickstart today's video. I would like to start this video with the beautiful lines which reads, there is nothing called good or bad memory. There is only trained and untrained memory. So you might have guessed already that what this video is all about. Today's video is all about memory. Most of us feel that our memory is fixed. Some of us feel that कि मेरी memory fixed है, मेरा intelligence fixed है, मैं उसको नहीं बढ़ा सकता हूँ. And it is, let me tell you, it is absolutely wrong that you can increase your memory, you can increase your intelligence, provided that you know how to do it. So there is nothing called good or bad memory. There is only trained and untrained memory. अगर आपने अपने मेमोरी को ट्रेन किया है तो आपकी मेमोरी शार्प होगी. अगर आपने आपके मेमोरी को ट्रेन नहीं किया है तो आपकी मेमोरी शार्प नहीं होगी. इट वुड बी ब्लंट. सो लेट्स सी एंड स्टार्ट दिस वीडियो. सो पहला क्वेश्चन तो ये आता है सबको कि व्हाट इज द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ आवर माइंड. माइंड की मेमोरी कैपेसिटी कितना है, ये हमेशा क्वेश्चन रहता था मेरे माइंड में, हमेशा क्वेश्चन घिसा था. एंड फाइनली आई फाउंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. तो हमारे माइंड की कैपेसिटी जो है अप्रोक्सीमेटली है 2.5 पेटाबाइट्स, और यू कैन से इट इज इक्विवेलेंट टू अ मिलियन gigabytes. So a million GB is the capacity of our mind. Now let's see the tools to sharpen your memory. So we will see the some behavior tools to sharpen your memory, and those behavior tools will be zero cost. In fact, they will be negative cost. उनको implement करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत लगेगी, बट कोई पैसा वगैरह नहीं लगेगा. And it will be highly scientific. There is no need that you should have a biological background to understand this. I'll make the explanation as easy as ABCD. So let's see ki what are the behavior tools and what are the things that affects your memory. So first thing that affects your memory is nothing but novelty. कोई भी चीज जब नहीं होती है, नई चीज, let me change the color first. Any new thing directly captures your attention, and आपका जो focus and concentration हो, you automatically get captured by the things that is novelty, and there is a high probability that particular thing will stamped down into your memory. So first thing that affects your memory is novelty. Second thing that affects your memory is nothing but the repetition. And most of us know that the more you repeat a particular thing, there is a high probability that particular thing will get stamped down into your long-term memory. So repetition is actually key whenever it comes to the transfer of the memory from transfer of the information from short-term memory to long-term memory. तो जितना आप चीज़ों को repeat करते हो उतना ही आपका long-term memory में वो चले जाता है. Now while doing the repetition, it's very important that यू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. जो भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टॉपिक आप याद रखना चाहते हो, इफ यू सिंपली क्रैम इट, अगर आप सिर्फ क्रैमिंग करते हो, क्रैमिंग इज नथिंग बट रट्टा मारना होता है. अगर आप सिर्फ रट्टा मारते हो तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नॉट रिटेन दैट इंफॉर्मेशन. बट अगर आप उस चीज को कॉम्प्रीहेंड करते हो, टू कॉम्प्रीहेंड मीन्स नथिंग बट दैट इज टू अंडरस्टैंड. अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखते हो एंड तब चीज़ों को जब रिपीट करते हो, देन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल रिटेन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड नंबर ऑफ रिपीटेशंस रिक्वायर्ड will reduce drastically when you will repeat that particular thing. So second thing that impacts your memory is nothing but the repetition. Now there is something, now when it comes to repetition, most of us repeat the thing. मतलब जब कभी रिवीजन की बात आती है, तब मैं खुद बचपन में, when I was in childhood, when I was in college, and number of students I have been saying right now, तो जो वो रिपीटेशन या फिर कोई रिवीजन करते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, बुक को ओपन कर देते हैं एंड उसको रिपीट कर देते हैं. कि हम सिर्फ उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं, कंसिडर्ड एज अ रिवीजन. तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है. whenever it comes to repetition or revision, it's very important to recall mentally. So mental recall बहुत ज़्यादा जरूरी है.
rather than just opening book and seeing the information. तो when you will जब mental recall कर रहे हो तो it's important that you take a pen and pencil, ऐसा कोई पेज लीजिए and make a bulletin points या फिर कोई tree diagram, whatever you want to make that particular thing stamped down into your long term memory. Now there is something called spaced repetition. अगर फॉर एग्जांपल स्पेस रिपीटेशन, द नेम इटसेल्फ शोज दैट कि अगर आपने रिपीटेशन एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से की, then the number of particular repetition will be required, will be drastically reduced, and there is will be the high probability that that particular information will get stamped down into your long term memory. So spaced repetition is nothing but the distribution of the learning over a period of time rather than learning at once. मतलब कोई भी चीज़ हम फॉर एग्जाम्पल आई इलेबोरेटेड, मैं अपनी साइड में इलेबोरेट करता हूँ। कोई भी चीज़ अगर मुझे कोई चीज़ याद रखनी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू रिमेम्बर दिस फैक्ट कि एन एडल्ट हैज़ अ 206 बोन्स, अगर आप दो मैं ये फैक्ट याद रखना चाहता हूँ, अगर ये फैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल योर लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, योर लॉन्ग टर्म मेमोरी हेट फैक्ट्स। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि दो 206 बोन्स है ह्यूमन बॉडी में। नाउ if I repeat that particular information for 20 times in a day, I will that will be not productive as compared to if I repeat that information. If I repeat that particular information over a period of 20 days, once a time. For इसका मतलब ये होता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन मैं एक दिन में 20 टाइम्स रिपीट करूँ तो मुझे उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा जितना ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन मैं 20 दिनों में एक टाइम अगर रिपीट करूँ उतना ज़्यादा होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। सो आपको कोई भी चीज़ को याद रखना है कि एक दिन में सारी चीज़ें अगर आप रिपीट कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट विल बी नॉट प्रोडक्टिव, इट विल बी नॉट इफिशिएंट। बट वही चीज़ इफ यू आर रिपीटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग कर रहे हो, देन इट विल बी मोर प्रोडक्टिव। So it's quite easy कि first there is a thumb rule actually what you need to do। कोई भी चीज़ अगर आप रिपीट करना चाहते हो तो मेक श्योर दैट कि उसे पहले द मोमेंट यू लर्न इट, कोई इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है तो उसे तो सेकेंड नेक्स्ट डे पे रिवाइज कीजिए, दैट विल बी योर फर्स्ट रिवीजन। एंड आफ्टर दैट रिवाइज इट आफ्टर 1 or 2 days, इसके बाद 2 या 3 दिन बाद रिवाइज कीजिए, दैट विल हेल्प यू। एंड आफ्टर दैट रिवाइज इट आफ्टर अ वीक, मतलब एक वीक के बाद, एंड आफ्टर दैट यू कैन से यू कैन रिवाइज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आफ्टर अ मंथ। नाउ दिस इज अ साइंटिफिक एंड स्ट्रेटेजिक वे टू रिवाइज द थिंग्स। अगर आप ऐसे रिवीजन करते हो दैट विल देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट जो आप रिवाइज करना चाहते हो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर हो जाए और जो नंबर ऑफ रिपीटेशंस रिक्वायर्ड विल बी ड्रास्टिकली रिड्यूस। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। सो इट्स वेरी इजी, सिंपल याद रखना है कि आपको कोई भी चीज़ रिवाइज करनी है तो पहले उसको इमीडिएटली रिवाइज कीजिए, उसके बाद 2 या 3 दिन बाद रिवाइज कीजिए, उसके बाद एक वीक बाद रिवाइज कीजिए, एंड देन रिवाइज इट आफ्टर अ मंथ फॉर मोर बेनिफिट्स। Now, third thing that affects your memory is nothing but the association. Now, association, this word itself shows nothing but the association का अगर नॉर्मल हम मीनिंग देखें तो ये क्या होता है, कनेक्शन, फॉर्म कनेक्शन। सो एसोसिएशन में आपको कुछ नहीं करना है, बट I'll elaborate it with the help of the example. In fact, it is the best memory technique I have ever come across. फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर चीज़ याद रखनी है, एसोसिएशन का मतलब होता है, दिस एसोसिएशन टेक्निक मतलब क्या होता है कि कोई भी नई चीज़ आपको जो याद रखनी है उसको आपको कनेक्ट करना है, एसोसिएट करना है जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। आई एम रिपीटिंग वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, मेक श्योर दैट यू हियर इट प्रॉपर्ली। एसोसिएशन, मेथड ऑफ एसोसिएशन में हम क्या करते हैं कि जो नई चीज़ मुझे याद रखनी है उसको मैं कनेक्ट करूंगा, एसोसिएट करूंगा जो चीज़ मुझे ऑलरेडी पता है। Got it? So let's see it with the help of the example. For example, मुझे याद रखना है कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। This is a factual information and I have already told you that your long term memory hates factual information. Long term memory में factual information बहुत समय लगता है एंटर करने के लिए।
तो ये चीज़ अगर मुझे याद रखनी है, आई कैन यूज मेथड ऑफ एसोसिएशन। तो ये चीज़ मुझे एक्चुअली जब याद रखनी थी, आई यूज मेथड ऑफ एसोसिएशन। नाउ 23rd मार्च को देर इज माई सिस्टर सी's बर्थडे, माई एल्डर सी's बर्थडे इज ऑन 23rd मार्च। नाउ इसको याद रखने के लिए मैं सिंपली क्या किया, आई हैव एसोसिएटेड माई सिस्टर्स बर्थडे विद दिस थिंग। सो दिस इज नथिंग बट द एसोसिएशन वेयर जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे माइंड में प्रेजेंट थी, उस चीज को मैंने नई, जो चीज मुझे याद रखना चाहता था, मैं उस चीज के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज नथिंग बट द मेथड ऑफ एसोसिएशन। मतलब आई न्यू ऑलरेडी कि दैट माई एल्डर सी's बर्थडे इज ऑन 23rd मार्च। तो उसके एक दिन पहले मैंने एसोसिएट कर दिया कि देर इज नथिंग बट द वर्ल्ड वाटर डे। आई होप यू अंडरस्टूड कि इस मेथड ऑफ एसोसिएशन को कैसे फॉलो करता है, एंड इट इज द इजीएस्ट मेमोरी टेक्निक यू कैन फॉलो, एंड यू कैन रिप मैक्सिमम benefits from the least efforts. Now, last but not least, that is the most important thing, is nothing but the emotional resonance. You have a, we are a creature of emotions actually. So emotions has a deep impact on us. I have already told you that you should remember this basic equation, that is information plus emotion is equal to long term memory. Now, कोई भी चीज, whenever you are consuming any information and if your emotional makeup is not good at that time, then वो चीज आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी, that will thing will not enter your long term memory. Now, if my emotional makeup is good while consuming the information, then there is a high probability that particular information will get stamped down into the long term memory. मतलब वो चीजें मुझे बहुत जल्दी समझ में आएगी. So this is the emotional results, and I told you that to improve your emotional makeup, it's very easy. You need to follow the two things, in fact three things, which are the foundation of the learnings. Not only the foundation of the learning, but foundation of your entire life. That is sleep, good amount of rest, meditation, and last and the important one, that is nothing but the physical exercise. If you are into the practice of good rest, meditation, and तो एंड फिजिकल एक्सरसाइज, तो आपका इमोशनल मेकअप हमेशा अच्छा ही रहेगा. I hope you are understanding what you are trying to come on here. So these are the four things that impacts your memory. Now, let's see the behavioral tools that help you to boost your memory. Now the first prerequisite condition, मैं आगे जो भी टूल्स बताने वाला हूँ उसकी एक पहली कंडीशन, प्रीरिक्विसाइट कंडीशन क्या है कि यू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट. मतलब मैं जो भी टूल्स बताने वाला हूँ वो टूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो गुड, वो फॉलो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, बट इफ यू आर नॉट टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट स्लीप इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ एज वेल एज लर्निंग कैपेसिटीज. तो अगर आप गुड रेस्ट, गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट ले रहे हो तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट आपका मेमोरी जो है वो अच्छी तरीके से फंक्शन करता है. इनफैक्ट जिस तरीके से मोबाइल को चार्जर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमें स्लीप की ज़रूरत पड़ती है. स्लीप इज अवर चार्जर, नथिंग बट इट हेल्प अस टू गेट रिचार्ज. तो आगे याद रखना, मैं जो भी बताने वाला हूँ उसके प्रीरिक्विसाइट कंडीशन ये है कि यू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट. Recommended amount of sleep is 8 hours a day, but yes, fine, you can take 7 and 7.5 hours of sleep for healthy benefits. So these are the very good lines. I love these lines. Sleep is a bridge between despair and hope. Now, these are the two neuroscientists, Mackay and Cahill. They performed. They are very famous neuroscientists in the field of memory. They performed number of experiments in their well-formed laboratory, and they come up with certain conclusions. Now, इसका एक conclusion, they published a research paper which I was going through before some days, and in this research paper I came across this all the experiments. It was given over there. They found in that experiment that there is a particular chemical called epinephrine. इपिनेफ्रिन को ही इसको ही एड्रेनालिन भी बोला जाता है.
Now, if you spike that adrenaline and epinephrine, then you there is a high probability कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको ज़्यादा समय याद रहेगा. Now they also give the precise time when this chemical should when this chemical should be released in your mind. Now that timing is nothing but the 10 to 15 minutes after the learning session. I am repeating whatever I am saying. मतलब अगर आपके माइंड में इपिनेफ्रिन, दैट इज नथिंग बट एड्रेनालिन, ये अगर आपके माइंड में आ जाता है, बट कब, जब लर्निंग हो चुकी है, पढ़ाई करके 10 या 15 मिनट्स के बीच में अगर आपके माइंड में इपिनेफ्रिन नाम का केमिकल आ जाता है, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो आपने जो पढ़ा है वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर करेगा, और जो नंबर ऑफ रिपीटेशंस होंगे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे. सो मेक श्योर दैट कि इपिनेफ्रिन हमें चाहिए, बट इपिनेफ्रिन हमें कब चाहिए, द टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल. इपिनेफ्रिन हमें चाहिए एट द एंड ऑफ द लर्निंग बाउट्स, मतलब पढ़ाई के इमीडिएटली 10 से 15 मिनट अगर आप कोई भी चीज़ जो आपको इपिनेफ्रिन दे रही है, दैट इपिनेफ्रिन will make sure that learned information gets stamped down into your memory. Now let's see the, तो कोई भी चीज़, इट्स अ जनरल थिंग, मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो आपको इपिनेफ्रिन देती है, या फिर despite the epinephrine in your mind will help you to sharpen your memory. तो लेट्स सी द टूल्स विच गिव्स यू इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन. तो हम ऐसे टूल्स देखते हैं कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं, बिहेवियर टूल्स हैं जो इपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन माइंड में नेचुरली रिलीज करते हैं, और दे कैन हेल्प यू इन द मेमोरी, शार्पनिंग योर मेमोरी. So first tool is nothing but your coffee. Coffee actually helps you in three ways. First, it releases the एडिनोसिन, मतलब जो एडिनोसिन एक नाम का केमिकल होता है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टायर्डनेस इन दिस, इट बिल्ड्स द एक्चुअली स्लीप प्रेशर बिल्ड करता है ये. अगर आप सुबह उठते हो और आपको बहुत थका थका सा महसूस होता है, इफ यू फील वेरी टायर्ड एंड लेजी थ्रू आउट द डे, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द एडिनोसिन. नाउ फर्स्ट, कॉफी कॉफी में होता है कैफीन. कैफीन जो है वो एडिनोसिन को हटा देता है माइंड से, एंड यू फील अलर्ट, आप अलर्ट हो जाते हो. सो दिस इज द फर्स्ट वे कॉफी विल हेल्प यू. सेकेंड, कॉफी जो है वो डोपामिन का भी इम्पैक्ट करता है. जो बॉडी में जो डोपामिन सिक्रीट करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, या जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, उनकी कैपेसिटी बढ़ा देता है डोपामिन सिक्रीट करने की. तो दिस इम्पैक्ट also has, and dopamine, all of you know that it is a universal currency, it is one of the happiness chemical, it is also the chemical which is responsible for motivation and drive. And third, that is the nothing but it releases adrenaline. तो ये एड्रेनालिन रिलीज करता है, दैट इज नथिंग बट द इपिनेफ्रिन, जो आपको मेमोरी फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग विच need to be discussed over here is the timing when to consume the coffee. Now, when I came across the study, I was completely astonished एक्चुअली कि मैं गलत चीज़ें फॉलो कर रहा था, कि कॉफ़ी हम पढ़ाई के पहले पीते हैं. सोसाइटी में यही, दिस इज अ रॉन्ग वे, कि कॉफ़ी पहले पी जाओ एंड देन पढ़ाई करो. नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. रिसर्च के हिसाब से हमें क्या एडिनोसिन ये एड्रेनालिन कब चाहिए, बिटवीन 10 टू 15 मिनट्स, मतलब 10 से 15 मिनट पढ़ाई के इमीडिएटली 10 से 15 मिनट बाद अगर आप एड्रेनालिन मिलता है आपको, तो आप को आपकी मेमोरी काफ़ी शार्प हो जाएगी, एंड जो लर्न इंफॉर्मेशन है दैट विल एंटर इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन बहुत कम हो जाएगी. तो ये कॉफ़ी आपको कब पीना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉफ़ी आपको पीना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द लर्निंग बाउट्स, मतलब जैसे ही फॉर एग्जांपल 10-15 मिनट पढ़ाई करने के ख़त्म होने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 1 घंटा मुझे पढ़ना है, तो जैसे ही ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो जाते हैं, तब मुझे कॉफ़ी कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि कैफीन जो है, कैफीन टेक्स नियरली 26 मिनट्स टू गेट
सर्कुलेट इनटू योर बॉडी। मतलब कैफीन 26 मिनट लेता है, अप्रोक्सीमेटली 26 to 27 मिनट टू गेट सर्कुलेटेड इन द योर एंटायर बॉडी एंड ब्लड स्ट्रीम। तो दैट्स वाई आपको ये कॉफ़ी कप पीना पड़ेगा। जैसे ही आपका एंड ऑफ द सेशन हो रहा है, पढ़ाई का जो लर्निंग सेशन है वो 10 एंड हो रहा है, तो उसके इमीडिएट वहाँ पे आपको कॉफ़ी पीना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड दैट तो तभी आपको जैसे ही आप कॉफ़ी पीते हो तो एड्रेनालिन आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली you will be able to reap the maximum benefits out of it. So this is the first tool to sharpen your memory. Second is nothing but a cold bath. Now this is actually this has ये बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है as a therapy in Western countries. People are using it as a therapy. In fact, this is a cold water bath is the it's a therapy. Now when you are when you are taking a bath with the cold water, same you get the epinephrine. आपको epinephrine मिलता है. In fact, not only epinephrine, you also get dopamine, which is responsible for happiness and all those things. But we here we are discussing about the epinephrine. हम यहाँ पे epinephrine के बारे में डिस्कशन कर ले। तो जब कभी आप ठंडे पानी से नहाते हो ना, वो कितना ठंडा होना चाहिए? इट शुड बी कोल्ड इनफ दैट यू फील अनकंफर्टेबल, कि थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए, एंड इट शुड बी नॉट कोल्ड इनफ दैट यू हर्ट यूर सेल्फ। मतलब खुद को हर्ट भी नहीं करना है, विथ सेफ्टी यू नीड टू डू इट। सो माई रिकमेंडेशन इज नथिंग बट are the if you are the person who as of now is taking bath with the hot water, अगर आप गर्म पानी से नहाते हो अभी, तो make a easy transition to the cold water। मतलब उसको पहले थोड़ा सा ठंडा करो, देन उसकी और उसे ठंडा करो, और कुछ दिनों बाद और बढ़ा। डोंट directly jump into the ice cold water, so that will hurt you। So make sure that it should be cold enough that you should feel uncomfortable। अनकंफर्टेबल मतलब कैसे फील हो? देयर शुड बी शिवरिंग इन योर बॉडी, मतलब आपको शिवरिंग होना चाहिए, एंड देयर शुड बी द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। मतलब सांस फूलनी चाहिए आपकी, थोड़ी सांस लेने में जब तकलीफ जाएगी, तो उतना ठंडा पानी होना चाहिए टू रिलीज टू स्पाइक द एपिनेफ्रिन इन योर माइंड। अगेन ये परफॉर्म कब करना है? एट द एंड ऑफ द लर्निंग सेशन। आई नो इट्स नॉट एक्चुअली इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर एवरीवन, बट अगर इफ यू हैव द मॉडेस्ट कंट्रोल ओवर योर रूटीन, देन यू कैन परफॉर्म इट। तो जैसे ही आप फॉर एग्जांपल मुझे मैंने 1 घंटा पढ़ लिया है, तो उसके बाद अगर मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ 10 या 15 मिनट बाद, तो मुझे इपिनेफ्रिन मिलेगा, एंड इपिनेफ्रिन विल प्ले इट्स रोल इन द memory retention. So second tool is nothing but the cold bath. Now there was an article published in a Neuron journal. It's a journal, and उस आर्टिकल का नाम था Mechanisms of the Memory Under the Stress. Now उस आर्टिकल में कहा गया था कि actually this is not the first, we are not the first who say that cold water will help you in retention of the memory. Actually during the medieval times, पुराने ज़माने में लोग पीपल यूज टू फॉलो इट, फॉर एग्जांपल अगर पुराने ज़माने के जो टीचर्स थे, उनको अगर जो गुरु थे, उनको अगर वो कोई चीज़ अगर आप उनके स्टूडेंट्स के मेमोरी में फिट करना चाहते थे, तो वो क्या करते थे? एट दैट टाइम दे यूज टू थ्रो देयर स्टूडेंट्स इनटू द वाटर, दे यूज टू थ्रो their students into the cold water. It may sound what you can say surprising, but yeah, that was the way. अगर आप ये फिर भी if you are not getting familiar with it, तो मैं और आपको एक एग्जांपल देता हूँ। All of you must have seen this movie दंगल। ये दंगल मूवी सबने देखा है। दंगल मूवी में एक समय आता है जब आमिर खान उसकी बेटी को पानी में फेंक देता है, और क्योंकि एट द टाइम वो उसकी बेटी को ये सिखाना चाहता है कि एवरी टाइम हिज फादर विल नॉट बी देयर, मतलब वो खुद उसकी मदद करने के लिए नहीं आ सकता है। देयर विल बी सम सिचुएशन इन हर लाइफ विच शी हैज टू फेस अलोन। तो ये लेसन सिखाना चाहता था वो दंगल में आमिर खान। तो एट दैट टाइम ही थ्रोज हिज kids into the water. So this is the practice actually humans have been following since the time immemorial। तो बहुत पहले समय से ये प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है।
But right now we are getting the science about this. Yes, that practice is valid. So don't forget to take the bath with the cold water. Now, Eric Kandel is a Nobel Prize winner of 2002 in medicines. He's a professor at the Columbia Medical School. His laboratory has also performed a number of experiments on the memory, and his laboratory said, मतलब उनकी स्टडी में ये पाया गया, इफ यू परफॉर्म द वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, अगर आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो, जिम में जाते हो, कोई भी वेट लिफ्ट करते हो, तो क्या होता है एक्चुअली, आपके बोन से, आपके ये बोन से केमिकल निकलता है ऑस्टियोकैल्सिन. This chemical get released from your bones, and this chemical is very responsible. This chemical is responsible. It acts as a fertilizer to the hippocampus. The hippocampus is a part of the brain which is responsible for storage of the short-term memories. शॉर्ट टर्म मेमोरी. सो दिस इज द थिंग कि जब आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करते हो तो आपको ऑस्टियोकैल्सिन मिलता है, और ऑस्टियोकैल्सिन डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द हिप्पोकैम्पस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्ट टर्म मेमोरी. तो यू कैन परफॉर्म दिस, दैट्स व्हाई एक्सरसाइज इज द फाउंडेशन. फिजिकल एक्सरसाइज इज द फाउंडेशन ऑफ द लर्निंग. तो इफ यू आर फिजिकली एक्टिव तो नो डाउट एट ऑल इट विल इम्पैक्ट मेमोरी. तो ट्राई कीजिए कि आप कोई ना कोई वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करें. नाउ यू कैन परफॉर्म द वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस ईदर बिफोर द स्टडी और आफ्टर द स्टडी. देयर इज नो थंब रूल रिगार्डिंग दैट. तो ऑस्टियोकैल्सिन आपको बिफोर द स्टडी भी मिलेगा, आफ्टर द स्टडी मिलेगा. ओनली व्हेन इट कम्स टू इपिनेफ्रिन, तब आपको याद रखना है कि उस वो इपिनेफ्रिन आपको चाहिए पढ़ाई के बाद में. ऑस्टियोकैल्सिन आपको आगे पहले भी अगर आपके माइंड में आ जाता है, बाद में भी आ जाता है, तो इट विल हेल्प यू इन ईदर वे. Now, if you perform the resistance exercises, for example, if you perform the cardio exercises, not resistance exercises, it comes under weightlifting. तो फॉर एग्जांपल आप कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हो, सेम लेबोरेटरी में जो रिसर्च में सामने आया था कि कार्डियो एक्सरसाइजेस, अगर आपको, इफ योर सोल इंटेंशन इज ऑफ द लर्निंग, टू इम्प्रूव योर लर्निंग एंड मेमोरी, तो आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना पड़ेगा अगेन एट द एंड ऑफ द लर्निंग सेशन. मतलब पढ़ाई करने के बाद आपको कार्डियो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ेगी, बिकॉज कार्डियो एक्सरसाइज रिलीजेस एड्रेनालिन. अगेन एड्रेनालिन इज नथिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इपिनेफ्रिन. तो कार्डियो एक्सरसाइजेस क्या है, इपिनेफ्रिन आपके रिलीज करते हैं, and it helps for in the retention of the long term memory. Now again timing is very crucial for here. ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि because this timing is very important, कब परफॉर्म करना है. अगर आप वेट लिफ्ट करते हो तो you can do the weight lifting either before the learning session or after the learning session. But cardio exercises आप अगर आप प्रेफर करते हो तो you need to do it आफ्टर द लर्निंग सेशन, बिकॉज वो आपको इपिनेफ्रिन देता है और ये आपको ऑस्टियोकैल्सिन देता है. I hope you understood what I am trying to convey over here. So cardio exercises are the exercises which increases your heartbeat. मतलब कोई भी एक्सरसाइज जो आपका हार्ट बीट बढ़ाती हो और आपको बोलने में तकलीफ हो, आपकी सांस फूलती हो, that is nothing but a cardio exercises. Like if you are doing a running या फिर स्किपिंग वगैरह करते हो, तो these are nothing but the cardio exercises. She, now she's a Wendy Suzuki. She's a Wendy Suzuki. She's a professor of neuroscience and psychology at the New York University. Her laboratory has also performed different experiments, and her laboratory has came up with the conclusion that performing meditation. Oh, I already told you this meditation part. Why you need to meditation? Why need to meditate? Why meditation is not a choice or a wicked activity? So meditation, performing a meditation for 30 minutes for 8 weeks. अगर आप मेडिटेशन 13 मिनट्स तक का 8 वीक्स तक करते हो तो आपका मेमोरी काफ़ी शार्प, नॉट ओनली मेमोरी, इट हेल्प्स यू टू
इन फोकस एंड कंसंट्रेशन एज वेल एज। तो इसका मतलब अगर 13 मिनट्स का मेडिटेशन आप 8 वीक्स तक करते हो तो ऑब्वियसली आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो 8 वीक्स के बाद इसके मेमोरी और फोकस के ऊपर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। Now again the timing is important. You need to perform this meditation only in the morning because research is now showing that if you perform the focused attention meditation मतलब there is a one technique of this meditation called focus attention। तो ये meditation अगर आप नाइट को परफॉर्म करते हो तो आपको it will interrupt your sleep। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू परफॉर्म दिस मेडिटेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह आपको परफॉर्म करते हो मेडिटेशन फॉर 13 मिनट्स फॉर द नेक्स्ट 8 वीक्स। तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपको आपके मेमोरी के ऊपर एंड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, नॉट ओनली ऑन फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, that meditation will impact you your entire life. You will see that it has an impact in every dimension, every domain of your life. Now the last but not least is nothing but the naps. If you take a good amount sleep, I have already told you that is important to take. Now if you prefer to take a nap, if you have a modest control over your routine, I know कि it's not convenient for everyone to take a nap, but अगर आप एक स्टूडेंट और आपका रूटीन आपके हाथ में है तो प्रेफर टू टेक अ नैप because a nap of 30 minutes, from 30 minutes to 90 minutes will help you in the longer memory retention. How? I'll tell you this कि this is a nothing but the hippocampus। यहाँ पे I have told you आपकी short term memories रहती है। Now the thing is हिपोकैम्पस की हिपोकैम्पस हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी, मतलब इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, इट हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी। तो ये क्या होता है, तो एक समय इसकी अगर कैपेसिटी फुल हो गई, डजेंट मैटर आप कितना पढ़ रहे हो, कितना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो, वो आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं बिकॉज उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। नाउ इफ यू टेक अ नैप, अगर आप नैप लेते हो दोपहर में, वो सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो भी इनफैक्ट इट्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेक्स्ट लर्निंग, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन होती है वो सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। तो वो इंफॉर्मेशन अगर यहाँ की कैपेसिटी अगर फुल हो गई तो डजेंट मैटर आप कितना पढ़ रहे हो, फिर वो आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। तो इस बट जब आप बीच में नैप ले लेते हो, यू टेक अ नैप्स ऑफ ऑलमोस्ट 30 मिनट्स और 90 मिनट्स, तो ये ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ का जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो न्यू कॉर्टेक्स में ट्रांसफर हो जाता है। न्यू कॉर्टेक्स इज नथिंग बट द एरिया ऑफ योर ब्रेन, ये आपको दिख ही रहा है यहाँ पे न्यू कॉर्टेक्स क्या है। तो दिस इज द न्यू कॉर्टेक्स। तो दिस इज द लॉन्ग टर्म मेमोरी, यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है। सो दिस इज द थिंग कि अगर आप बीच में नैप्स लेते हो तो दिस शॉर्ट टर्म मेमोरी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है विल गेट ट्रांसफर इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और ये स्पेस एक्चुअली खाली हो जाती है। उसके बाद अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपका ग्रास्पिंग पावर, जो भी पढ़ोगे वो माइंड में ज़्यादा तरीके से स्पीड के साथ एंटर करेगा। I hope you understood what I am trying to convey over here. So I hope you enjoyed this video. If you like this video, to make sure that you like it, comment it, and share it, and don't forget to subscribe. You can connect with me through the Instagram. Life School is my channel. Thank you guys. Thank you for watching this video. That's it for today. Have a great day ahead. Thank you. Thanks a lot.